देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। चीन खिलाफ दुनिया भर के मुल्क लामबंद हो रहे हैं। ब्रिटेन और कैनेडा के वलों बीजिंग ओलंपिक का राजनीतिक बाईकाट किया गया है ते नाल ही चीन ते मनुखी अधिकारां की उलंघना के इल्जाम लाए ने। अमेरिका के ऐलान तो बाद दुनिया भर के मुल्क चीन ते निशाना साध रहे हैं। अमेरिका आस्ट्रेलिया तो बाद कैनेडा ते ब्रिटेन भी चीन के बीजिंग च होने वाले विंटर ओलंपिक्स का राजनीतिक बाईकाट करने का ऐलान कर दिता है। हमलावर नीति ते खुद नूं ताकतवर बनाउण दे लई चीन दीआं योजनावां दी दुनिया भर च आलोचना हो रही है। गुआढ़ी मुल्कां समेत कई देशों के नाल चीन की खड़की हुई है, जिस तो बाद हुण चीन दुनिया के निशाने ते है। कैनेडा जिसका पहले ही चीन के नाल 36 का आंकड़ा चल रहा है, चीन ते मनुखी अधिकारां की उलंघना के इल्जाम लाउंदिआं यह फैसला लिया। As a country, indeed, as many partners around the world, we are extremely concerned by the repeated human rights violations by the Chinese government. That is why we are announcing today that we will not be sending any diplomatic representation to the Beijing Olympic Paralympic Games this winter. Our athletes have been training for years and are looking forward to compete the highest level against athletes from around the world, and they will continue to have all of our fullest support as they show the extraordinary success that Canada has at Winter Olympic Games. I don't think the decision by Canada or by many other countries to choose to not send diplomatic representation to the Beijing Olympics and Paralympics is going to come as a surprise to China. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी अपने अधिकारी ते होर अमला बीजिंग भेजण तो इनकार किया। Biden has decided US diplomats will boycott the Beijing Olympics. New Zealand and Australia have followed suit. It's International Human Rights Day on Friday, so will the Prime Minister raise his eyes from his chaos and commit the UK to joining the diplomatic boycott? Or does his desperation for trade deals trump human rights? As I've said before, we do not support sporting boycotts, but there are no plans for ministers, certainly no plans for ministers to attend the Winter Olympics. Mr. Speaker, it is clear from what I said earlier on that the government has no hesitation in raising these issues with China, as I did with President Xi the last time I talked to him, and there will be effectively a diplomatic boycott of the Winter Olympics in Beijing. No ministers are expected to attend. What I think the House and no officials, Mr. Speaker, but what I can tell the House is that I do not think that sporting boycotts are sensible, and that remains the policy of the government. सब तो पहला अमेरिका ने चीन दीआं हरकतां दी आलोचना करदिआं बीजिंग च होने वाले विंटर ओलंपिक्स का सियासी बाईकाट करने का फैसला किया सी, जिस तो बाद आस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कां ने अमेरिका के फैसले नूं समर्थन दिंदिआं ऐलान किया। The administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses. The athletes on Team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home, but we will not be contributing to the fanfare of the Games. U.S. diplomatic or official representation would treat these Games as business as usual in the face of the PRC's egregious human rights abuses and atrocities in Xinjiang. It's no surprise that the Australian government will not be sending any official representatives to the forthcoming Winter Games in China. For some time, people have been very aware that we have been raising a number of issues that have not been received well in China, and there's been a disagreement between us on those matters. We have always been open to meet with the Chinese government to talk about their concerns, whether it's their concerns with our foreign interference legislation or other foreign investment rules, where Australia takes a very strong stand, standing up for Australia's interests. They've been very critical of Australia in our efforts to ensure that we have a strong national defence force, particularly in relation, most recently, to our decision to acquire nuclear-powered submarines. But of course, the human rights abuses in Xinjiang and the many other issues that Australia has consistently raised
We have been very pleased and very happy to talk to the Chinese government about these issues. And ਸਿਆਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀजिंग ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। As the President has told President Xi, standing up for human rights is in the DNA of Americans. We have a fundamental commitment to promoting human rights, and we feel strongly in our position, and we will continue to take actions to advance human rights in China and beyond. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਆਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।